कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली है, वो क्या पहलू रहे, कांग्रेस उस पर क्या कहेगी? देखिए, ये टेक्निकल इनकम टैक्स से संबंधित हमारे जो इनकम टैक्स को जो कोर्ट के अंदर जो बेंच देखता है, हम लोग उसके पास में गए और उसने हमारे को वापस एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए भेजा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमें रिलीफ कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकते हैं। और हम इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कानून हमारे साथ है, हमें हर हालत में रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब हमारे को रिलीफ मिलेगा, जब तक के इलेक्शंस खत्म हो गए होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब आप टाइमिंग देखिए, ऐसे टाइम के ऊपर हर चीज का प्रोसेस होता है। इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे को सबसे पहले नोटिस असेसिंग ऑफिसर देगा, उसको चैलेंज उसके नेक्स्ट लेवल पे डिपार्टमेंट में ही करेंगे हम, उसके बाद में हम उसको चैलेंज फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे, जब जाकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे और जब हाई कोर्ट के बाद में फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये पूरा हमारा एक लीगल एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपने असेसिंग ऑफिसर को, प्रिंसिपल आईटी को आपने क्या चैलेंज किया, आपने प्रिंसिपल आईटी को क्या सीआईटी के आपने चैलेंज किया, फिर आईटीएटी चैलेंज किया। तो ये सारी प्रोसेस सबको मालूम है कि अल्टीमेटली हमें रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक के चुनाव निकल जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर कौन इन सब चीजों को देखेगा, ये हमारा कहना है। माकन साहब, आप लोगों ने चुनाव आयोग से कंप्लेन किया था इस इशू को भी लेकर के कि आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, चुनाव आयोग का रिस्पांस क्या है इस पर? अभी हम वेट कर रहे हैं चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग का भी ये दायित्व बन जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का भी दायित्व है। तो चुनाव आयोग के पास में भी उनका भी दरवाजा हमने खटखटाया है। और ये इससे बड़ा स्पष्ट, हमने आपको बड़ा स्पष्ट दो चीजें बताई कि हमसे अननेसेसरी डिमांड हमारे से रेस किया जा रहा है, और दूसरा हमने कहा कि बीजेपी खुद एट डिफॉल्ट है और उसको एकदम से साफ छोड़ा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसी चुनी जा रही है जिसको पिनलाइज किया जा रहा है। और मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, 1993-94 का आप लोग पता कराएं, कुछ और ऑपोजिशन पार्टी को भी नोटिसेस आए। 93-94 के कुछ और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेस आने शुरू हो गए हैं, जो कि बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टीज। माकन साहब, हेलो माकन साहब, इधर माकन साहब, इधर माकन साहब, you are saying that you are following the due legal process, but there is no time. So it's an unprecedented situation where you're not getting relief from the income tax department, and on the other hand you saying, since there's no time, so are you not moving the Supreme Court immediately in such unprecedented circumstance? We are moving to the Supreme Court. It's just because there was long weekend and holidays, we didn't do it. But the first thing early next week is we are approaching the Supreme Court. सर इधर भी माकन साहब, जिस तरह से आप लोगों ने अपने अकाउंट लेवल प्लेइंग फील्ड के लोग का आरोप लगा, उस पर जो है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो शिकायतें हैं उस पर जांच होनी चाहिए और कांग्रेस को भी चुनाव कैंपेन के पैसा मिलना चाहिए। इस पर जो है भारतीय विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी, आपत्ति की। उसके बाद भी मैथ्यू मिलर का बयान आया कि हम अपने स्टैंड पर कायम है, कांग्रेस की बातें सुनी जानी चाहिए। देखिए, हमें भारत के लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है, हमें भारत के न्याय पद्धति पे, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। हमें किसी भी बाहर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारे संविधान, हमारे न्यायपालिका, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। हमें बाहर की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। माकन साहब, जो डिमांड इसमें रेज किया गया है 93-94 का, तब भी आपकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें भी आप लोगों ने उसको क्लियर क्यों नहीं किया इसको? और 10 साल 2004 से 2014 तक भी आपकी सरकार रही, उसमें आपने इसको क्लियर क्यों नहीं किया? क्योंकि आज ये जो नौबत आई है, इसको पहले भी क्लियर कर सकते थे आप। आपका क्या मतलब क्लियर करने का? नहीं, क्लियर करने का क्या मतलब है, मेरे को समझ में नहीं आया। जो डिमांड रेज किया गया आपके टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, आपको क्या लगता है कि हम लोग क्लियर नहीं करते? हम अपने इनकम टैक्स का, हम अपनी असेसमेंट हम लोग देते हैं तो क्लियर होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप हमसे पूछ रहे हो कि क्लियर क्यों नहीं कर रहे, हम लोगों ने क्लियर किया जब तो अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। उसके बीच में
98 के आसपास में वाजपेयी जी की भी तो 5 साल की सरकार रही, उन्होंने तो हमसे नहीं रेज किया, इसका मतलब क्लियर था। अब एकदम से जो है ये 93 94 का अब जाकर के 30 साल बाद में अब कहां से आ गया? हमने तो हमेशा क्लियर, हमने तो पहले दिन से क्लियर किया हुआ था। आपने note circulate हुआ है, there's a note that has been circulated. Could you explain the note, because there are several entries that are missing as far as the name is. Only one note has been circulated. 22-23 contribution in excess of 20,000, and there are entries missing in 5 lakh, 2 lakh, 8 lakh rupees for the BJP. अच्छा, So this, could you explain why this particular note has been circulated? Why this note is circulated? You've asked a good question, because this is just one page out of 400, more than 400 pages note. This is, I have sent you a prototype of what is submitted to the election commission, and this is the first page of 2022-23, and in the first page you can see this note I have circulated, because the first page itself clearly indicates how big is, this anomaly is, because at many places you won't find the name and the address itself. So imagine on one page, the first page, if you can see such discrepancies, what would be the fate in rest of the pages? It is a 400-page document, out of which this is just 1 year. So we have analyzed 3 years, the details of which I have given, I have compiled and given. This is one page which I have circulated. That is in all three in total would be around 9. But for all 8 years, it would not be less than 2,500 pages. सर, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, हाई कोर्ट से अब तक आपको राहत नहीं मिली है, तो कितने आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिल पाएगी? दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि और भी विपक्षी दलों को इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन सभी विपक्षी दलों से रीच आउट करके एक कॉमन मोर्चा बनाकर इस चीज को आगे बढ़ाएगी, और क्या ऑप्शन आप लोगों के पास बचता है? देखिए, इसमें हम लोग जो हैं, इसको, ये लोकतंत्र पे हमला है। सबसे बड़ी बात तो हमको ये समझना चाहिए, हमारे फाइनेंसेस इस तरीके से, अगर अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा अकाउंट फ्रीज करना है, तो जैसे हमारा 1 महीने पूरा इन्होंने 280 करोड़ के करीब हमारे अकाउंट को फ्रीज रखा, जिसमें से 135 करोड़ रुपए निकाल करके ले गए। ये तब की बात है जबकि 135 करोड़ की डिमांड थी। अब 1823 करोड़ की डिमांड है, तो आप सोचिए कि ये कहां तक, किस एक्सटेंट तक के जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। तो इसको हम लोग चाहे सड़क के ऊपर उतर करके लड़ने के लिए लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में, इससे बड़ा हमला लोकतंत्र पे मैं नहीं समझता कि आज तक के कभी भी हुआ होगा। और इसलिए हम लोग इसको सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्शंस के दौरान में हम लोग अगर अपनी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर पैसे हम नहीं खर्च कर सकते, कैंडिडेट्स को हम अपने आरटीजीएस नहीं हम भेज नहीं सकते, हम लोग एडवर्टीजमेंट्स हम लोग आप लोगों को नहीं कर सकते, तो हम लोग किस तरीके से, कोई उधार पे तो हम लोगों को पैसे देगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों पे हमला है। हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज के ऊपर से भी हम लोग बात करेंगे, बाकियों को जिनको नोटिस कईयों को आया है, जो हमें पता चला है, ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है। कल ही कि हम लोगों को भी कल ही ये सारे नोटिस आए हैं, और अपोजिशन पार्टीज को भी नोटिस आ रहे हैं। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाया जा सके, उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को देखेगा। ये सिर्फ टैक्सेशन मैटर की तरह नहीं इसको लिया जाना चाहिए। माकन जी एक सवाल मेरे पास। एक मिनट, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। अभी जो माकन जी ने कहा है, ऐसे नोटिसों से हमें, हमारे मनोबल पर कोई असर नहीं होगा। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। कुछ 2 दिन पहले हमने एक अभियान, मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की। 3 तारीख को घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे नोटिसों से जो अभी हम गुजर रहे हैं, जो नोटिस आफ्टर नोटिस आ रहा है, सीताराम केसरी जी के जमाने के नोटिस आए हैं, उसके पहले उमाशंकर दीक्षित के जमाने के नोटिस आएंगे, और हम इंतजार कर रहे हैं जमनालाल बजाज जो कोषाध्यक्ष जी थे जब महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे, जमनालाल बजाज के समय के भी नोटिस हमें आएंगे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, पर हमारे मनोबल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। हम और आक्रामक होंगे,
हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। हाँ जी, आपका माकन जी इधर मेरे इनको मैं थैंक यू जयराम जी। मैं संदीप हूं वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा दो क्वेश्चन है। एक मेन एलिगेशन इज टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो विल यू अप्रोच और राइट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट व्हाई नॉट यू यू आर लुकिंग टू बीजेपी? एंड सेकंड इज, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि 1800 करोड़ रुपया दे सकते हैं? आपको मालूम है 1800 कितना होता है? 1800 रुपया नहीं, 1800 करोड़ है। 1800 रुपया नहीं है, ये 1800 करोड़ है। आपको मालूम है 1800 करोड़ कितना होता है? हमारे पूरे इलेक्शंस का, पिछले बार का 2019 का पूरे इलेक्शंस का हमारा 800 करोड़ का खर्चा था, पूरे इलेक्शंस का। तो 1800 करोड़ उतना होता है। जयराम सर, ऐसा है, जो पहला क्वेश्चन आपका था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस चीज को भी देख रहे हैं कि लीगली कैसे हम इसको टेकअप कर सकते हैं। सब चीजें हम लोग क्योंकि ये एकदम से कल हुआ है और हमने उनके जितने भी पुराने खाते हैं सब असेस किया है, तो हम बीजेपी वालों को इतने हल्के में छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं एक करेक्शन करूं, जो अभी अभी अजय माकिन जी ने कहा है, ये आरोप नहीं है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, एलिगेशन। ये एलिगेशन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो जानकारी खुद पार्टियां देती हैं, उस पर हमने एआई का इस्तेमाल करके, आजकल हर बच्चा हमारे देश में आई और एआई की बात करते हैं, तो हम भी कुछ एआई जानते हैं और उसी एआई के सहारे हमने जो जानकारी बीजेपी पार्टी ने वेबसाइट पर है उसका विश्लेषण करके इन्होंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। तो इसको एलिगेशन मत कहिए। ये 4620 4620 राइट, 4600 4600 करोड़ रुपया जो वायलेशन है, ये एलिगेशन नहीं है, ये एआई के द्वारा जनरेट किया गया है। मगन जी, सवाल ये है कि इलेक्शन अपने शबाब पर है, आप लोगों के पास, कांग्रेस खाते के पास पैसा नहीं और बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। इलेक्शन आम लोगों की भाषा में किस तरह से प्रभावित हो रहा है आप लोग का चुनाव प्रचार? किस तरह से डे टू डे जो एक्सपेंसेज हैं वो कांग्रेस नहीं कर पा रही, लोगों तक ये बात कैसे पहुंच रही है? देखिए, ये तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या मंशा है, ताकि आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा जा रहा है। अभी इसको इससे भी जोड़ करके देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स का पैसा उनके पास है, हजारों करोड़। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से जमा कराया है पैसा, उसमें नाम नहीं दिए डोनर्स के, उनके एड्रेसेस नहीं दिए डोनर्स के, वो एक वायलेशन अलग से, वो भी इलीगल है। एक तरफ तो इलीगल पैसे के ऊपर पैसे को देख करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंख बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग से हमारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस ने मेंबरशिप ड्राइव से पैसा इकट्ठा किया, जो एनएसवाई ने जो जेब खर्ची, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे हैं, उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं। 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी ले गया है, जो कि हमारे इलेक्शन में खर्च हो सकता था। तो अगर आप पिछले बार के अगर इलेक्शन में एक्सपेंसेस से कंपेयर करें, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 20% के करीब तो इलेक्शन कमीशन हमारे बैंक अकाउंट से उठा करके ले गया, जो हमारा पिछली बार इलेक्शन में खर्च हुआ था। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से है? ये डेमोक्रेसी में अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी पे ऐसा हमला होगा तो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और अगर फिर ये ऐसी पार्टीज को वापस मौका देंगे तो ये अगली बार तक के तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। सर, पहले फेज के चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है, कोषाध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी के हैं और क्योंकि चुनाव लड़ना है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास नहीं, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी? कैसे आप रिसोर्सेज जनरेट करेंगे ताकि इलेक्शन लड़ सके? देखिए, हम लोगों के पास में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब हम लोगों के तैयार है। आज हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग जो हैं हर तरीके की प्रेशर के लिए, उसको झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए
आक्रामक तरीके से हम लोग तैयार हैं। हमारे पास में हर तरीके की इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए प्लान्स हमारे पास इन प्लेस हैं और हम लोग उसको समय आने के ऊपर उसका उपयोग करेंगे। Hi, this is Samir. I'm from New York Times newspaper. You are clearly at the disadvantage in terms of resources and other things. What does it say about the prospects of the free and fair election in this country? Because when you have like large opposition parties having not those kinds of resources to fight that kind of thing. Thanks. Under these circumstances, we are trying to give our best performance, but the question which you asked was about free and fair elections. So already you can see that it won't be a free and fair elections, because the most important thing is the resources. If we are not allowed to utilize our own resources, 135 crores from own bank account was stolen by the BJP ruling party, which is around 20% of what we spent last time. How can it be a free and fair election? And we are facing another onslaught on our accounts, because now 1823 crore rupees of demand notice has come to us. It means that they are going to do the same thing which they did last time with just 135 crore of demand notice. So this in no way seems to be a free and fair election. The democracy is under attack, and this they are doing to the principal opposition party, the Congress party, and other parties also. While I was coming, I got information that at least 2 other opposition parties also have got similar notices for the year 1993-94. So imagine these tax notices from 1993-94 are being sent to ensure that the political parties are unable to spend their entire amount of money which they have collected from their own resources. माकन जी, कल प्रधानमंत्री ने कहा, ट्विटर पे कहा कि भाई कांग्रेस बाज नहीं आ रही है और दबाव डाल रही है। मतलब 70 साल से आप सत्ता में थे और अब 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ताकत कहां से लाते हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सनसनी के खुलासे पर है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका जवाब कल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने दे दिया है। ये आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पे खतरा है और ये इनकम टैक्स से टेक्निकलिटीज का मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको इनकम टैक्स से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के सबसे अच्छे लीगल ब्रेन्स की हम मदद ले रहे हैं और हम इसको कानूनन हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमें कहना होगा, जो बात आपने कही है वो भी कहेंगे और जो जिस तरीके से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो भी बात हम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कहेंगे इसकी स्ट्रेटेजी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना ठीक नहीं, लेकिन आपकी बात भी वाजिब है। एक तो सवाल यूट्यूबर से लेकर सर, माकन जी 135 करोड़ रुपए का लियन और 1800 करोड़ रुपए का डिमांड नोट, इन दोनों पैसे को हटा के कांग्रेस के पास कितना पैसा बचेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? आपको लगता है कि इसके बाद में भी कुछ बच जाएगा? Mr. Makan and also to Jaram, we've been reporting this story of tax notices for the past 1 month. But as just following up on Sanjay ji's question, why haven't you gone to the Supreme Court one? You haven't done any political action of taking to the streets, taking out protests. There's not enough pressure on the government. If you feel that this is a deliberate act to deny you a level playing field, that there's no adequate response to that action. First of all, I don't agree on both these counts. We went to the Supreme Court 3 times. So we have gone to the Supreme Court 3 times on these matters, and on 1st April we are going again. We went for an early hearing also to the Supreme Court, but Supreme Court said since we'll be hearing you out on 1st April, there's no need for early hearing. So on 1st April, there's already it is listed there. We went to the Supreme Court for an early hearing also, but Supreme Court said that there's no need for the early hearing. So it is not that we are not going to the Supreme Court. We have gone to the Supreme Court 3 times.
And on 1st April, we expect Supreme Court to give us some relief. And second is on hitting on the street. We've had demonstrations across the country in all all state headquarters on this issue. We've had demonstrations twice, and from next week onward, we are going to scale it up. Yeah. And you may recollect that Sonia ji herself, along with Kharge ji and Rahul Gandhi ji, came here to address this issue. Give me a single example when Sonia ji, Rahul ji and Kharge ji, all three of them together, Jairam ji, myself, the entire KC Venugopal, all of us, we took up this issue. So be it in the court, be it in the public, or also on the street, we are very serious, and whatever best we can do, we are doing. It's a threefold question. The IT, one question. When the ITAT had actually heard this matter, it had noted that the 20% demand that the IT department had made, you've not paid that, and the IT proceedings that had started, recovery proceedings, were from 2021. Then why was this 20% not paid? And even at the High Court, when it was hearing this particular matter, Justice Yashwant Verma had a clear question to ask, that was the Congress party, sleeping till 2021? Yeah. Very good question. I think this should be answered. When IT department was asking 20% at that time, 20% of 135 crores meant 27 crores. And we didn't have that much of money at that time. And once you give 20%, it is very difficult to take it back. This is the first. So when in this case, in this way, now they have raised a demand of 1823 crores. So should we be paying them 400 crore rupees to the income tax department? Should we be paying? Do we have this much of money? And this is when they had asked us to pay 20%, that was the time when we were facing state elections. We didn't have money. So this money we had collected all through last year to fight the parliament elections. And they took away all the money and they are asking for more money. So if suppose 20%, using this 20% logic, if we pay now, we may be required to pay 400 crore rupees. So should the opposition party first pay 20% bribe to Narendra Modi's government and then contest the elections? Is this a level playing field? And 20% for just 27 crores for just 14 lakh rupees violation. Whereas for 42 crores of violation, not even a single penny is being charged from the BJP. One of the reasons why, to add to what Mr. Makan has just said, that 20% is an admission that there is something that we have done wrong. When fundamentally we are arguing that the order itself is flawed and it is biased and it's politically motivated, to cough up 20%. This is like chanda do, dhanda lo. This is what the BJP did on electoral bonds. It took the money and then gave the contract. You can't do that on income tax assessments. And secondly, there is no guarantee that if our appeal is upheld, that 20 crores is in fact going to come back. So it's easy to say that this 20 crores should have been paid, but the political economy of the 20% is that this income tax order was fundamentally rooted in a desire to cripple the Congress party financially and to make the 2024 election unfree and unfair. That is the strategy of the BJP. Yeah. Sir, how many accounts do you have? How many are frozen currently and how many are not frozen? And how much money did you raise from your crowdfunding exercise? In total in Delhi, we have in our 4 banks around 11 accounts. And when I say 11 accounts, I'm talking about NSUI and Youth Congress. And this is, I'm talking only about Delhi for the Indian National Congress. They had first marked lien in all our 11 accounts to the limit of 135 crores in some banks and to the limit of 75 crores in some banks. They did this on 13th February. And unfortunately for us, in none of these bank accounts, in any of these bank accounts, we had more than 135 crores or 75 crores.
So in all these 11 accounts, effectively 280 crores got stuck because there was no way to reconcile between amongst the banks, and there was no way that we could have taken out money and put it in one bank because the entire money was marked as lien. So we were unable to utilize full these 280 crores. So you imagine, at the eve of elections from 13th of February for 5 weeks continuously, we were unable to utilize our 280 crore rupees. This was the first thing. Then the income tax department took away 135 crore rupees from these out of these 280 crores. And it was day before yesterday evening that we were able to take out our entire amount of money and pay as advances for our election campaign. Just day before yesterday. And perhaps our last week's press conference played an important role, because after that only the government, perhaps, or the bank or the income tax department allowed us, because we were not allowed at that time. Whereas the news was being planted by the CBDT, by the income tax department, that no account is freeze. Right from day one, they were saying no account is freeze. Technically, they may say no account is freeze, but just tell me, when they have marked lien of 135 crores in a bank where we have 90 crore rupees, in another bank where we have 40 crore rupees, in another bank where we have 30 crore rupees. So effectively 90 plus 40 plus 30, the entire amount is locked freeze. So when we were unable to utilize our 280 crore rupees, the entire amount was frozen. The entire amount was marked as lien, out of which they forcibly took away 135 crores from us, even when the case was going on in the High Court. So this is the high-handedness of the government, which you all should understand. Crowdfunding, we in just 1.5-2 months, we were able to collect 25 crore rupees. And it was around 50 lakh rupees a day at an average we used to get. But as soon as the message went that our accounts are frozen, we also didn't encourage people to give money because accounts was frozen. We never knew how much from this amount the government will, the income tax department will take it back. But 25 crores was what we were able to, and it is the highest in recent past any political party has been able to collect through crowdfunding. Mr. Makin, when the Delhi High Court rejected your plea, it also noted that the tax department appears to have collected substantial and concrete evidence warranting further scrutiny and examination. In background to this, given this statement because High Court has the same bench has rejected 3 times our appeal. So which one are you talking about? This is the 28th March. Okay. Judicial system or take a judicial course for the course. This is just which came yesterday, and there are many legal matters pertaining to this, and we are going to Supreme Court. We are filing SLP in the Supreme Court against this decision of the High Court. So this is what is under preparation, and this is what we are taking to the Supreme Court. Acha, I had kept it for another press conference, but Jairamji wants me to announce that I am filing a PIL to take 4,600 crore rupees from the BJP on the basis of what we have got now, what I have just told. So we are approaching court, and as a PIL, we are going to approach courts. We'll see which court, which level. We'll see which court. We'll see which court, which level to approach. माकन जी सवाल इधर से. Let us see. We'll discuss. माकन जी, Congress, we are thinking to file. We are thinking to file a PIL. अब पूछ लूं. He is not just a treasurer. During the COVID pandemic, he is one person I know who spent his time very productively. He's become one of India's leading computer programmers. He can program in Python, he's program in R. He can get a job in any top
software export company. So when he has applied our language to the ECI data, I think these are nothing to be sneezed at. He's more than a treasure. One thing I would like to clarify. Jairam ji does not mean that I am quitting politics. माखन सर हाँ देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि बीजेपी के अकाउंट्स में जो कमियां हैं, जिसको इनकम टैक्स ने नजरअंदाज किया है, जैसे मैंने बताया कि हर साल जो उन्होंने अकाउंट सबमिट किया है, उसमें हजारों लोगों के एड्रेसेस और नाम तक नहीं डाले हुए हैं और करोड़ों रुपए उनके नाम के डोनेशंस वसूल करे हुए हैं। अगर यही हिसाब लगाया जाए, वायलेशंस इनकम टैक्स के लगाया जाए, तो 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी को इनकम टैक्स को देना पड़ सकता है पिछले 7 सालों का ही केवल। तो इसको लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि हम पीआईएल डालेंगे, हम कोर्ट जाएंगे और कौन डालेगा, किस कोर्ट में डालेंगे, इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम पीआईएल लेकर के हम इसको जाएंगे और बीजेपी के से 4,600 करोड़ रुपए की डिमांड करी जानी चाहिए, ये हम मांग करें। माकन साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, देश से बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने का मुद्दा उठाया जा रहा है। यूएन में ये मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसको लेकर कंसर्न जताया गया। आपको लगता है कि देश की छवि भी इससे खराब हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारा संविधान सक्षम है। मैंने पहले भी बोला, हमारा संविधान सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं कि अपने आंतरिक मामले को हम खुद ही सुलटाएं। हमारी न्यायपालिका मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। तो हमें किसी भी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं और हम इस मसले को हम खुद उठाएंगे और बाहर की किसी की भी हमारे को मदद की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। Last question. Hi, thank you so much. Two things, sir. Firstly, the 31st March India Alliance protest. A, do you have permission from the Delhi police to protest on Ramlila Maidan? And two, for an international audience that likes to see a big picture, because that's what I represent, can you tell us the importance of that protest on the 31st? A, permission from Delhi police, I and B, think the importance. permission part I will say, and the other things Jairam ji can say. Permission, yesterday evening I was told that the police has permitted. Yesterday evening I was told that we've got permission. The Joint Commissioner has informed that we've got permission. This is what was told to me yesterday. Rest of the things I think Jairam ji can explain. No, this will be the second major India Group rally over the last 10 days. As you know, we had at the culmination of the Bharat Jodo Nyaya Yatra on the 17th of March in Shivaji Park in Mumbai, we had a very major India Group rally in which leaders of all the members of the India Group participated. And it's expected that the 31st rally in Ramlila grounds would be a similar such occasion. Well, the main objective is to highlight the threats to democracy by the actions of the BJP, the determined actions of the Prime Minister, who ensure that we are one nation, no election, that this is going to be an unfree election, unfair election. The Election Commission did not even meet the India Group on the issue of 100% VVPATs. Now they've unleashed tax terrorism. This is nothing but tax terrorism against the Congress and a few other opposition parties, reopening tax records going back 34 years, 32 years, making completely unjustified and unreasonable demands while allowing the BJP to go scot-free by the same yardstick. And then, of course, indulging in this horrendous scam which has been declared unconstitutional by the Supreme Court, the electoral bonds. So this is a political rally and it's meant to demonstrate solidarity against the authoritarian regime of Mr. Modi,
who is hell bent on decimating all opposition parties. It will not be proper for me to divulge, but I'm saying when I'm saying that two opposition parties, and they are part of India Alliance. They are part of the Indian group. Thank you. इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और इसे लेकर 31 तारीख की रैली कर रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो है इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोड़कर उसको मुद्दा बना रही है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उस कॉज को सपोर्ट कर रही है या उस बैनर के साथ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी लोकतंत्र की हत्या जो इस पूरे रैली की थीम है उसको मानती है, और उसमें सभी बातों को रखा जाएगा। जिस तरीके से हर ऑपोजिशन पार्टी पीड़ित है इस वक्त, सभी बातों को रखा जाएगा, ऐसा हमारे को उम्मीद है और ऐसा ही होगा। Okay, thank you. में राहत नहीं मिली है, वो क्या पहलू रहे, कांग्रेस उस पर क्या कहेगी? देखिए, ये टेक्निकल इनकम टैक्स से संबंधित हमारे जो इनकम टैक्स को जो कोर्ट के अंदर जो बेंच देखता है, हम लोग उसके पास में गए और उसने हमारे को वापस एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए भेजा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमें रिलीफ कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकते हैं, और हम इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कानून हमारे साथ है, हमें हर हालत में रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब हमारे को रिलीफ मिलेगा, जब तक के इलेक्शंस खत्म हो गए होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब आप टाइमिंग देखिए, ऐसे टाइम के ऊपर हर चीज का प्रोसेस होता है। इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे को सबसे पहले नोटिस असेसिंग ऑफिसर देगा, उसको चैलेंज उसके नेक्स्ट लेवल पे डिपार्टमेंट में ही करेंगे हम, उसके बाद में हम उसको चैलेंज फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे, जब जाकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे।
और जब हाई कोर्ट के बाद में फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये पूरा हमारा एक लीगल एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपने असेसिंग ऑफिसर को, प्रिंसिपल आईटी को आपने क्या चैलेंज किया, आपने प्रिंसिपल आईटी को क्या सीआईटी के आपने चैलेंज किया, फिर आईटीएटी चैलेंज किया। तो ये सारी प्रोसेस सबको मालूम है कि अल्टीमेटली हमें रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक के चुनाव निकल जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर कौन इन सब चीजों को देखेगा, ये हमारा कहना है। माकन साहब, आप लोगों ने चुनाव आयोग से कंप्लेन किया था इस इशू को भी लेकर के कि आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, चुनाव आयोग का रिस्पांस क्या है इस पर? अभी हम वेट कर रहे हैं चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग का भी ये दायित्व बन जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना।